In this session today, we'll be starting PHP. So PHP is a server-side programming language, and we use PHP so that we can process user information on the server side. What do we mean by server side? We'll be discussing in a few minutes. JavaScript, we have already used JavaScript in some programs. So whatever programs execute on JavaScript, that is done on the client side. That means it is downloaded on the client's browser, and there it is compiled, processed, and the output is given. But many times we want that server should also take our input, process it, and give the result back. So that is done through server-side programs, and one of the very popular server-side programming language is PHP. Other server-side programming languages are we can use ASP.NET when we are using .NET technology. We can use JSP servlet when we are using Java technology. And another a very popular language that we are studying today, that is PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. How does this work? We'll see some very simple examples. Now, to start PHP, first of all, you must have XAMPP installed on your system. So we have already installed XAMPP, and you have to start the Apache and MySQL. Then when we install XAMPP in our system, I'll come to this chapter, this example here. When you install XAMPP, then you can see that there is a folder htdocs. This is a folder htdocs in your XAMPP. So in htdocs, what we have to do, we have to create a folder where all our programs, PHP programs will be stored. So let us give it the name as PHP. So I'll give a name as PHP. And then inside the PHP, we have to use any editor, and there we can write the PHP programs. How do we write the PHP programs and everything we'll be discussing. So we can start with let us see which editors are available. We can use Visual Studio Code as well as many other editors. You can use Dreamweaver also if you want. So here you can see it is XAMPP folder. Inside that we have htdocs. This is predefined folder, and then we have this PHP, and this is our file in which we have to start working. Now we can close it from here, close the window. We can start Visual Studio Code from here also, and then we can select the folder if we want. So I'll open the folder that we want to work in. The PHP, so I'll select this. And here we can create, yes, I trust this. Now here I'll create example1.php. So whatever we do in PHP is, first we have to create the HTML structure. So we'll create the HTML structure, and then we use then we can give this is the PHP tag. We start here, and then we close this way. So whatever we write inside this is treated as the PHP, and we can echo, who is the print statement. Hello user, welcome to PHP. I can use any tag, HTML tag. You can directly use in this. Yes. So now if we execute this, this will print hello user, welcome to PHP. So it has already been saved here in example one. Now to execute this, you have to open the browser,
And in the browser, you have to use localhost. Then inside localhost, you have to give the name of the folder that you have created. We have used PHP. And then here you have to give the name of the file. So it gives hello user, welcome to PHP. So whenever we use any code that any HTML page, any web page that uses this tag. So when we use this tag, this file must be saved with the extension .php. And whenever this file will be executed, this will be executed in the backend in the server side. So why do we need this and how do we use this? Where should we use this? We'll see this with an example. So I'll repeat the steps once again. Whenever we have to execute the PHP program, what we have to do, number one, the step number one is you have to have this XAMPP installed in your software, in your computer. Apache and MySQL, Apache should be running. This first one should be green. Then what you have to do, you have to come to the folder, and in this folder, you have to create in the XAMPP folder, there is a htdocs. When you install XAMPP, there will be a htdocs folder. Inside this htdocs folder, you have to create a folder in which you have to store your PHP programs. I have created this PHP example, and here this is the example. You can use any editor. The extension should be .php. There is one more program which I have written. Let me see. Okay. So now we'll be using how and why should we use PHP. So let us see. Suppose I create a form. I create a form. And inside this form, I take some input from the user. Enter your, maybe this is a login form. Okay, so this is a login form. So it will ask for username and password. We have input prime poster. Next, name poster. T1. I'll use a BR. We'll decorate it later on. I'll ask for password. Then it will be input type equals to suppose password name equals to this is suppose T2. Then we have break tag. Then let us use input type equals to submit. There's a submit button, and the value is also value supposed to. So this is a form, and when this form is submitted, we have to mention action here. At present, we are not using any file to process it, so I'll keep it this way. Now, what we want is whenever this submit button is clicked, we'll use the name equals to submit. So here we'll check if is underscore set. This set is a function dollar underscore get, and we'll give the name of the submit button. If we set submit, let us check
So I'll save it, and now I'll try to run it. We have to run it from here. So this is login button. This is call to undefined function is set. So set function has to be checked. If set. Okay, so we have to check the isset function. Why do we use isset? I will check that also. So meanwhile, we'll discuss what is the role of PHP. So when we are using PHP, why we use PHP is because we want some information to be processed on the server side. So what are the informations that can be processed on the server side is, first of all, we can say that whenever, like in the case of login, this username and password will be checked in the database. We have already discussed some database example also. So uh, database is always stored where? It is always stored on the server. So in such situation, we cannot do it through JavaScript directly, because JavaScript will not go to the server to check the values on the database. So we need some method by the help of which we can do the processing, and we can check in the database whether that value is available or not. So in such situation, we will be using PHP. So how do we use PHP? We'll check that also. So here is one example. Is set we are trying to use. I'll save this program and I'll try to run it again. Okay, is set is done. I click Raj, I click I enter the password, and then you say hello user, welcome to PHP. Now let us try to understand this, how this is working. This part is the core PHP. This is the PHP tag. So this will only execute when this form has been submitted. So when we submit this form, the data will go to the server with the value of T1 and with the value of T2. Now here we have to put this condition. What is this condition? This condition is to check whether the form has been submitted or not. Suppose if we do not write this, then what will happen? Form will be printed and it will also print hello user, welcome to PHP. So if I save it like this, अभी क्या होगा कि ये फॉर्म रन होगा और ये PHP का कोड भी रन हो जाएगा, और PHP के कोड में लिखा हुआ है हेलो यूजर, तो ये आपको आउटपुट आ जाएगा फॉर्म के साथ हेलो यूजर वेलकम टू PHP। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि जब ये सबमिट करें उसके बाद ये चेक हो, और चेक होने के बाद ये बताए कि लॉगिन होगा कि नहीं होगा, या आगे कुछ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं कि ये सबमिट बटन को यूजर ने क्लिक किया है कि नहीं। अगर ये सबमिट बटन यूजर क्लिक करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये बटन सेट हो जाएगा। और अगर कंडीशन ये क्लिक नहीं हुआ है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको अभी रन करेंगे, तो इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दें, लेट मी सेव दिस, अभी इसको हम सेव कर चुके हैं और कम टू द ब्राउजर वंस अगेन एंड रिफ्रेश इट। अभी इसको अगर हम लोग सेव नहीं हुआ है, if is set example1.php, and let me save this once again और सबमिट बटन पर क्लिक करने से अभी देखिए जब सबमिट बटन क्लिक करेंगे तब ये आएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे रन कर रहे हैं तो ये पहले से नहीं दिख रहा है, जब सबमिट बटन क्लिक करेंगे तब ये दिखेगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि सबमिट बटन क्लिक करने से ये चेक करे
कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो बताए कि सही है, यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो बताए कि गलत है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को T1 और T2 में जो वैल्यू यूजर ने डाला है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विद डॉलर कीवर्ड। तो डॉलर हम लोग यूजर नेम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक वेरिएबल। इस वेरिएबल में हमको क्या चाहिए, T1 का वैल्यू चाहिए। तो T1 का वैल्यू के लिए लिखते हैं $_get, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T1 इन ब्रैकेट। तो ये T1 जो है इसका वैल्यू गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और हम पासवर्ड भी चाहिए, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा पासवर्ड, एक और वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड। और ये पासवर्ड हमको कैसे मिलेगा, इसी फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको T2 कर देंगे, तो ये हमको पासवर्ड तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, इफ suppose username is $username is equals to suppose username is Raj, and dollar password is equals to suppose comp123 @ ये पासवर्ड है। तो अगर ये पासवर्ड है तो हम लोग बोलेंगे कि पासवर्ड इज करेक्ट, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि पासवर्ड इज रॉन्ग। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर हम लोग इको कर सकते हैं, इको पासवर्ड इज करेक्ट, और एल्स पार्ट में हम लोग करेंगे पासवर्ड इज रॉन्ग। अभी हम लोग डेटाबेस नहीं कनेक्ट कर रहे, बाद में हम लोग डेटाबेस से भी कर सकते हैं कनेक्ट, वो भी सीखेंगे। अभी हम लोग सिंपल रखना चाहते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, व्हेन दिस फॉर्म विल बी सबमिटेड, सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि फॉर्म सबमिट बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। क्लिक हुआ है तब यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट करेगा हेलो यूजर वेलकम टू PHP। उसके बाद ये T1 और T2 का वैल्यू निकाल करके दो वेरिएबल में स्टोर करेगा, $यूजर नेम और $पासवर्ड। वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए डॉलर वर्ड हम लोग डॉलर सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग इफ स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं कि ये राज और कॉम 123 ऐट है, तो ये पासवर्ड करेक्ट बताएगा, नहीं तो पासवर्ड रॉन्ग बताएगा। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं। ब्राउजर में आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट छूट रहा है लाइन नंबर 25 में, तो हम लोग यहाँ पर लाइन नंबर 25 में ओके सेमीकोलन छूटा हुआ है, सेमीकोलन डाल दिए। एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड ऑन सेमीकोलन। अब फिर से हम लोग ब्राउजर में आते हैं और इसको रिफ्रेश करें। ओके, अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं राज और पासवर्ड डाल रहे हैं सी जो सही पासवर्ड है, ओके पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। पासवर्ड क्या हम लोग ने रखे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को एंटर करके देखेंगे। राज, अगर हम डाल रहे राज और पासवर्ड डाल रहे, कॉपी कर दिया, ये दिखा रहा है पासवर्ड इज करेक्ट, हेलो यूजर वेलकम टू PHP, पासवर्ड इज करेक्ट। और अगर हम यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं क्योंकि सही नहीं, तो ये बता रहा है पासवर्ड इज रॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं एक PHP प्रोग्राम को, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोगों का जो एम है वो ये सीखना है कि हाउ टू बी राइट अ PHP प्रोग्राम एंड व्हाई शुड बी यूज PHP प्रोग्राम। तो जहां पर भी हम लोगों को सर्वर साइड में प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी, देयर वी विल बी यूजिंग PHP, एंड PHP टैग इज यूज्ड, दिस इज द PHP टैग। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में वेबसाइट में वेब पेज में PHP टैग यूज करेंगे, दैट फाइल must be saved with .php extension, और इसको लोकल पे रन करने के लिए यू मस्ट हैव XAMPP इंस्टॉल इन योर सिस्टम। XAMPP इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर बनेगा, वहां पर ये प्रोग्राम बनेगा। अभी अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हम लोग इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहे हैं, इसको आई रिफ्रेश, आई एम एंटरिंग दिस राज,
और हम ये पासवर्ड कॉपी करके लेकर के आए हैं और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, दिखा रहे पासवर्ड इज करेक्ट। बट यहाँ पर देखिए ऊपर में T1 इज राज एंड T2 इज, ये वैल्यू आपको दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये वैल्यू दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोई भी देख सकता है, समझ सकता है कि हमने क्या पासवर्ड डाला है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा कि वॉट एवर वैल्यू वी आर यूजिंग दिस शुड नॉट कम एज अ यूआरएल। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखे, तो फॉर्म पे हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चेंज करेंगे, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, फॉर्म का वैल्यू मेथड पोस्ट और गेट होता है। तो अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज गेट, और नहीं तो हम लोग कर देते हैं पोस्ट। और जब यहाँ पर हम लोग पोस्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ये वैल्यू पोस्ट करना पड़ेगा और ये वैल्यू पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट करने के बाद फर्क क्या पड़ेगा कि अभी अगर हम लोगों ने इसको पोस्ट कर दिया है तो जहां जहां पर हम लोग गेट कर रहे थे उसको पोस्ट करना पड़ेगा। इसको सेव कर लेते हैं और अब अगर हम लोग इसको ब्राउजर में रन करेंगे, यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं राज, और जो भी पासवर्ड है उसको डाल रहे हैं, ये करेक्ट आ रहा है। बट आप देखिए यहाँ पर यूआरएल में वो वैल्यू नहीं आ रहा है। तो जब भी हम लोग कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सर्वर पे भेजना चाहते हैं जिसमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक पासवर्ड होता है या और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, हम लोग बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं, पिन कोड ट्रांसफर करते हैं, तो ऑल दोज इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर्स some safety security, so there we should use, in the form tag we should use the value of the method attribute as post. If we do not use this, then by default method is get, और जब हम लोग get use करते हैं तो get से value सब retrieve करते हैं, but वहां पर value दिखता है। अब अगर suppose you are ordering a biryani फ्रॉम जोमेटो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितना आप ऑर्डर कर रहे हैं, कौन सा रेस्टोरेंट यूज कर रहे हैं, ये अगर दिख रहा है तो मे बी उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपका सेफ्टी सिक्योरिटी, तो वहाँ पर हम लोग गेट भी यूज कर सकते हैं। बट देयर आर सिचुएशन जैसे पासवर्ड आप भेज रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको यूज करना ही चाहिए पोस्ट। तो दिस इज हाउ वी राइट द PHP programs. This is one simple sample example आपको मैंने बताया कि हम लोग PHP अगर यूज करेंगे तो PHP कैसे यूज कर सकते हैं। So this was session on PHP. अब देखिए इसमें सपोज हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि PHP में हमारे पास HTML का इंफॉर्मेशन हो, हम लोग डायरेक्टली अगर PHP में काम करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम लोग, हमारे पास ये टैग होना चाहिए, इस टैग के अंदर जो काम करना चाहते हैं वो हम लोग PHP में कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम लोगों ने एक बनाया था कि एक फॉर्म है, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख करके देख सकते हैं। इस सेट का मतलब होता है कि ये बटन सबमिट हो रहा है और सबमिट होने के बाद आपको चेक करना है। अगर ये कंडीशन हटा देंगे तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा तो इसमें वैल्यू नहीं होगा, तो ये सब लाइन में एरर्स आने लगेगा। जैसे इसको अभी हम हटा देते हैं, अब क्या होगा कि ये डायरेक्टली रन होगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी तो T1 T2 में वैल्यू आपने डाला नहीं है तो इस इन सब लाइन्स में एरर आने लगेगा। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं। ये इसको रिफ्रेश, देखिए ये आ रहा है अनडिफाइंड वैल्यू की T1, अनडिफाइंड वैल्यू T1, पासवर्ड इज रॉन्ग। ये नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो गया है, नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो गया है, तो T1 T2 ये सब तो उसको मिला ही नहीं। तो लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 21 सब लाइन उसमें एरर हो जाएगा। लाइन नंबर 20 में देखिए यहाँ पर T1 में वैल्यू नहीं आया है, यहाँ पर T2 में वैल्यू नहीं आया, तो ये सब एरर होने लगेगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तभी हम लोगों को ये काम करना है। तो इस सेशन में I just wanted to explain के how do we write a PHP program। तो इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज PHP में हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। वी आर ऑलरेडी डिस्कस डेटाबेस आल्सो, तो हम लोग डेटाबेस से कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, विल सी एवरीथिंग। तो आई विल कीप दिस सेशन small so that everyone can
run this program and understand it.